Before I start teaching any new concept, so are you guys clear what I had taught you in the last module? I mean, in the last module, as you can see on the screen, that in the last module I have tried to make you understand the concept of data. What is data? Why is it used in empirical analysis? Then you guys have come to know about the two different types of data, which is primary data and secondary data, which are used in empirical analysis or empirical research. And we have also concluded the last class by understanding the meaning of primary data and secondary data using some examples. So before I start teaching you or before I proceed any further, I just want to ask whether you guys have any sort of problem in understanding the last concepts, or shall I proceed? Anyone? Any confusion? Okay. Okay. No issue. Okay. So, as you guys have understood the concept of primary data and secondary data, and I have in the last class, as I have told you, that actually data in, excuse me, please mute yourself, it's annoying bit. Okay, excuse me, can you mute yourself? Okay, so in the last class I have told you that data, when it was initially collected, then its nature can be called as primary, but when it is published, or even if it is unpublished but it is already collected by someone else, but you as a researcher have tried to employ it for your own empirical research, for your own empirical purpose, then that data become secondary in nature. So now we will move on to the next primary concept of our module, which is methods of data collection. Now you should know that I have already told you that why data is necessary, why it is collected, what are the types of data that you can find in empirical analysis. But now the question arises, ki what are the methods of collecting data? What methods should be employed for data collection? So actually here data is primary, or in this case or in this heading, data, this data, primary implies what? Primary data actually, because I told you that initially when data was collected by the researcher himself or herself, then that data is primary data. So don't be confused. This data here is mainly implying the primary data. So what are the various methods that a researcher tries to employ while collecting primary data? Can anyone say how many methods are there? Any insight? Yes, there are. Direct personal investigation, indirect overall, information from correspondent, mails questionnaire, and schedule to enumerator. Okay, very good. But in broad terms, I mean, you have told the methods, I mean, you have told the sub methods, but broadly there are three methods. Broadly, there are, in broad sense, there are three methods. So the first method is personal interviews.
So the first method is personal interviews. So I mean, as the name suggests, research, can you say what personal interview or why it is used? How can a researcher try to use this particular method for data collection? So try to write 2 points. There are 2 points here, that this method is used when the researcher when the researcher has access to all the members. Here members implies what? Respondents. Correct? Is this point clear? Why is it's very self-explanatory? I think this particular, okay. I mean, this particular point needs no extra clarification. So in this personal interview case, what happens ki the researcher directly goes or send his what I can say, send his agents, okay, send his members, I mean, who are working under him, directly to collect the information from the respondents. Okay, so it will be like, another concept is like the researcher will conduct face to face interviews with whom? Respondents. So here you need to mark this particular point, face to face. So here the researcher will take data or try to collect data from the respondents by conducting a personal interview where he will meet the respondent face to face. The interview can be data can be collected from the respondents either by either orally or verbally, non-verbally. That depends on the method, or that depends on the researcher, when he whichever method he or she finds feasible at that moment actually. So these 2 points you need to remember. So now let's move on to the second point, second method, which is, just wait, Questionnaire. yes, very good, it's known as, wait, is the screen visible? Yes, sir. Okay. If you face any problem, then you just try to tell me. Mailing questionnaire. Okay, this is the second step of collecting primary data. So before I start explaining, can anyone say what a questionnaire is? What is a questionnaire? What is a questionnaire? Sir, it's basically a set of questions which are bound to certain parameters, or in which the person who asks questions cannot cross question the other person. Okay, anyone else? Other than Aditya?
Okay, Aditya, you are partially correct. I mean, you are almost correct, but you said ki there will be no chance of cross questions. But there are possibility that cross questions may appear, because suppose I came to you for collecting data and I asked you sort of personal questions. I mean, personal, which may offend you. Then you will say that, sir, why are you asking me these questions? This question has no meaning. I mean, it makes no sense. You have no right But to ask. you are in direct contact, na? So there's no point of questioning back. No, there are sort of questions in the questionnaire. I mean, I am saying because I have worked with it actually, so I am just trying to tell you about my experience. So there are sort of questions in the questionnaire where the respondent may be unwilling to answer. So he will ask, I don't want to answer, or sometimes he or she may feel offended. So yes, the questionnaire, but the point that you have made, the questionnaire should be well structured in such a way so that there should not arise any sort of ambiguity, any sort of like that questionnaire should not induce or should not be taken in an offensive way by the respondent. Am I clear regarding the point? Yes, sir. Okay, I am writing it, don't worry, I am writing the definition of questionnaire. So just write the definition first. So what is a questionnaire? It is a structured set of questions. It is a structured set of questions. This is point number 1. Point number 2 will be, it is designed to gather or to collect specific information or opinions from individuals for research, assessment, or survey purpose. So is this definition, I guess this definition is very much self-explanatory. If you guys have any question regarding this particular definition, so you can ask. Is this definition making any sense to you? This is the definition of a questionnaire. So what is a questionnaire? It's a structured set of questions. Why it is called structure? I mean, here structured implied ki, as I told, ki the questionnaire should not carry double meanings. I mean, I am asking you a particular question that should not be offensive to you. I mean, that sort of question, it should not contain any sort of personal questions. It should be it should contain open-ended questions, some general questions, and another thing is that those questions should be framed in such a manner that even a layman can understand, even an illiterate can understand what the investigator is trying to ask him or her. So that's why it is called a structured set of questions. That's why the adjective structured has been used. So why it is designed? It is designed to gather or collect specific information or opinion from the respondents so as to conduct a qualitative, or so as to conduct not qualitative, I mean so as to conduct a meaningful research, assessment, or any sort of good survey. So now, after defining questionnaire, I will try to explain how is it, I mean what does this mailing questionnaire method means, I mean how is it conducted. Actually, in case of mailing questionnaire method, the data
for the survey or for the purpose of research are collected by mail, by sending mails. So I am writing it. So just try to write with me the definition or the purpose. When the data in a survey sorry survey is collected by mail, the questionnaire is sent to each respondents via mail with a request with a request to complete and return it by a given date. So here when the data in the survey is collected, it is collected by mail. So in the mail the investigator would try to send the questionnaire, will try to send the questionnaire to each and every respondents collected or for the respective survey with a request that please try to complete the questionnaire and return it within a stipulated time. So am I clear to you regarding this method or any confusion? Sir, I have a doubt. Okay, ask. Sir, like, is the questionnaire designed in such a way that it would only target large piece of population, or it would like can be also designed in a way that that someone can as their personal perspective? Actually, Aditya, actually the questionnaire when it is sent, it has some purpose actually. Suppose let's say ki I am a researcher and I am trying to I am trying to collect data about about family income, okay, and you are my respondents, you guys in this particular session are my respondents, okay, and I will take your mails and try to send each and every one to collect the data, I mean regarding your family income and let's say your education level, your parents education level and your own education level, what is your highest qualification and stuff. So actually the whenever the questionnaire is sent, it depends on the purpose actually. So in the later case you will be able to know ki whether it is feasible to send. Yes, questionnaire, a mailing questionnaire has one advantage. Since in this case I will try to send a mail, so it can cover a large mass of people, isn't it? But there is one demerit also. Can anyone say? I mean, if anyone can say, The respondent. hmm. So there is a problem that it can cover. Respondent may take a long time. Yes.
that can be, but the most important problem is that in India, actually in India, some of the people, there are lots of people, especially in rural areas, they do not have any access to internet facilities, right? So it is very it's a very time convenient method, in terms of covering a large mass of people, but provided the condition that the respondent should be educated first, obviously, because I am going to send him the question. Okay, so he should know ABCD, or he should know the basic, he should have basic literacy to understand what is the purpose of the questionnaire, why it is sent. Second, he should must have an I mean he should have an access to internet facility or network facility, to be more specific, any sort of network facility. So, and other things that you have said, that those are also important, that he may take some time to respond, or he there is also a possibility that he is going to ignore the mail. There is also a possibility. So actually, whenever particular questionnaire is sent or mailed, it has some purpose, and it depends on yes, it has a basic possibility that it will cover a large mass of people. But those are the main constraints that will impede the effectiveness of mailing questionnaire. Aditya, I mean, is it clear? Yes, sir. Okay, okay. I'll be very much elated if you guys, like Aditya, if others also ask questions. I am ready to answer. Okay then. So let's move on to the last method. So the last method is telephone interviews. So as the name suggests itself, in this case And what is close-ended questions and open-ended questions in questionnaire? So the close-ended questions will be very much like, they will be very much direct actually. I mean, if I ask you what is your name, then what is your name actually, can you just say? Priya Goswami. Okay, Priya. Then you will answer that, sir, my name is Priya Goswami. It has no, you are not going to say that, sir, I am Jia. You are not going to say that. You will directly tell me that, sir, I am Priya Goswami. Or when I mail you a one question, you will write your name. So it has no multiple answers, right? But if I ask you a particular sort of a question, like, Structure type of questionnaire. I mean, I am just trying to tell you that, suppose, let's say, if I want to ask you a question like, what do you think whether BJP government is effective or Congress government used to be effective in India? So that sort, in that, if I ask you those sort of, if Samuel said that, sir, Congress government was effective because of this reasons. I like Congress government because of this reasons. Samuel said, no, sir, BJP government was very effective because these are my point of views regarding BJP government. So those questions are open-ended, because for that particular question you have multiple answers. I would like to give another sort of an example. It involves individualized response. Yes, let me cite another example, like let's say whether globalization, since you are students of economics, so I should refer some questions, I mean, I should refer some example from economics itself. So whether globalization is good for a developing nation like India,
then some will say that, sir, it's very good that India is globalizing day by day and is trying to open up and try to promote the concept of worldwide connectedness. But someone, I mean, those who are against the concept of globalization, they will like, sir, it's very bad that the India is opening up too much because it's creating sort of rural urban gap. MNCs are dominating our economic things. Sorry, MNCs are trying to dominate our own economic activity, and they are displacing the indigenous workers of the nation. So those are open-ended questions, but closed-ended questions will have a direct answer. Just like if I ask you 2 plus 2, what is 2 plus 2? You will say 4. Everyone will say 4. So am I clear to you, Priya? Yes, yes, ma'am. Okay. So now let's continue with this concept, telephone interviews. So in this method, what happens? It's just like the questionnaire method, where in the questionnaire method we used to send mails. We used to send the questionnaire to the respondents via mail. And here what will you do? The researcher will ask questions over telephonic conversation. So in this case, I will call you, suppose I am the researcher and I will call you, you are the respondents, and I will call you and ask you the questions. The questions can be open ended, close ended. So this is the in this method the data will be collected by over telephonic conversation actually. So I will just try to test. Can anyone say what will be a particular demerit of this particular method? Actually, there would be no face-to-face interaction, and Hmm? yeah, that's it. No face-to-face interaction. Okay. And any other demerit? Yes. Biasness will come is the possibility of influencing the respondent. Yes. So there are many more demerits actually. So as Aditya said that there will be no face-to-face connection. So uh, actually sometimes in telephonic conversation, right, we can't read uh, what the respondent will try to is implying to say. Actually whenever we used to meet face to face, if we during a face to face conversation actually we can easily, Body language. yes, you can easily judge whether the person is telling the truth or he or she is lying by his body language and his gesture and posture during the conversation. So that part is missing. Another one is saying that there can be a problem of network connectivity. Consider the case of rural India or people living in forest regions. Even in, I mean, even in places like even, I mean, even in some of the places, Indian places, network connectivity is still not there actually. So for collecting data from those individuals, it's very difficult. And there will also be a problem of biasness, because suppose during telephonic conversation I may ask you ki what is your family income. Actually your family income is around 1 lakh annual income, let's say, but over the telephonic conversation you are saying that, sir, my I am a very poor individual, I earn
over the years around 2000, let's say hypothetically. So that will bias the data, right? And due to data biasness, the policy implications will be hampered. The policy implications that will be derived from those data will be a biased one, and it will in the long run it will have no implications. It will face some statistical problems that we will discuss when I teach you econometrics. So is it okay? Am I audible? Yes. Okay. So now I will just try to teach you a small concept actually. So do you know that especially in case of mailing questionnaire, when a question is prepared initially, uh, before sending it to the mass of respondents, the particular question is initially tested. The appropriateness, the ethics related to that particular questionnaire will be initially tested over a small group of people. Do you know what that particular method is called? Pilot survey or 3 different method. Very good. It's known as pilot survey. If you guys are preparing for NetJRF also, so this particular question sometimes is asked in both paper 1 and paper 2. That's why I thought of telling you this particular concept. Just try to make note of it. Very, very important concept. They will ask you basic definitions, and this is very easy actually. So just write what is pilot survey. First point is it is a small scale preliminary survey. Conducted before a full scale survey. Second point is what is the purpose? I mean, why this particular method is employed? So as to test The suitability of question. yes, Versus the yes, 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 clarity. yes. So I am writing it so as to test the survey instruments. Survey instruments, say a questionnaire. Questionnaire and data collection method. So why it is used? So as to resolve any issues before implementing
the main survey. I mean, in a very nutshell, this particular method or of pilot survey is mainly used to test, as Priya has already said, is mainly used to test the viability of the prepared questionnaire, whether the questionnaire is viable or not, whether it's ethical or not, whether I mean, if there is any sort of issue regarding it's offensive, it's the language of the questionnaire is bit typical to understand, it's bit difficult to understand. So to test the viability, whether to test whether the questionnaire is appropriately constructed or not, or appropriately structured or not, this pilot survey is initially used or employed before conducting the big survey. So, any confusion? Is it clear? Okay. So now we are going to start another important topic. So till now we have understood the various methods of collecting primary data, then what is a questionnaire, and what is pilot survey. Now we will move on to the next concept, which is so can anyone tell me what is census method? पॉपुलेशन से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सेंसस मेथड कहते हैं। वेरी गुड। उसका एक दूसरा नाम है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? मतलब किसी और नाम से भी बुलाया जाता है उसको। Enumerated method. ओके, और कोई दूसरा नाम? ठीक है, तो किशन ने जैसा बोला कि एक पॉपुलेशन से जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेंसस मेथड बोलते हैं, और प्रिया ने अभी बोला कि एन्यूमरेटेड मेथड, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। तो कभी कभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में नेट जीआरएफ बोलो, और कभी कभी वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में भी पूछ देते हैं कि इनमें से किस मेथड को हम लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन बोलते हैं। तो ऑलवेज याद रखना, सेंसस को हम लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड बोलते हैं। सो मैं लिख के दे देता हूँ तुम लोगों को। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो जैसे कि किशन ने अभी बोला आप लोगों को, तो मैं वही लिख रहा हूँ अभी। तो क्या होता है इस पे, इंफॉर्मेशन relating all units of population or universe is is collected in this
मेथड। सो कोई एग्जांपल दे सकते हो? इस मेथड का? पॉपुलेशन एंट्री करने में जो होता है वो सेंसस में यूज करते हो। ठीक है, वेरी गुड। सो जो हमारा लास्ट सेंसस जो हुआ था उसका नाम, उसको कौन से साल में हुआ था वो? 2011। यस, हेलो। यस, तुम लोगों को सब आता है अच्छे से, अच्छा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो जो एग्ज़ाम्पल तुम लोगों का एग्ज़ाम्पल ही मैं देता हूँ, जैसे कि द 2011 सेंसस। जो ये सेंसस डेटा में क्या हुआ था कि हमारे देश का कितना पॉपुलेशन है, मतलब कितने आबादी है देश का, वो कलेक्ट किया गया था वहाँ से। सो 10 साल बाद होता है ये। अभी रिसेंट वाला बहुत जल्दी आने वाला है। सो अभी भी 2011 जो भी डेटा एनालिसिस हो रहा है, बिकॉज मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना, तो मेरे को भी लग रहा है ये चीज़, मतलब ये यूज़ करने में मतलब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ एक्चुअली, सो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। तो हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो मतलब तुम लोग सबसे में याद रखना, जो सेकेंडरी डेटा में जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स किसका होता है जानते हो? जब तुम किसी गवर्नमेंट या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, फिर आईएमएफ, हाँ डब्ल्यूटीओ, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस का और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का अगर कोई रिपोर्ट या फिर कोई उनका जो पब्लिश्ड कोई डेटा सेट अगर तुम लोग एम्पिरिकल एनालिसिस में अगर यूज़ करते हो, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तुम्हारे रिसर्च को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाता है। सो अभी जो डेमोग्राफिक रिसर्चेस जो हो रहा है अभी भी ये 2011 का जो सेंसस का जो डेटा है अभी भी यूज़ होता है इस पर। सो सेंसस में, सर काउंट होगा हाँ, HDI का जो डाटा होता है वो भी सेंसस में काउंट होगा? HDI एक्चुअली सेंसस में काउंट ऐसे नहीं होता है। HDI ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सो यस सर। वो तो अलग से कंप्यूट होता है एक्चुअली, वो दैट्स एन इंडेक्स। तो सेंसस में बहुत सारी चीज़ रहता है। जब तुम लोग डेटा यूज़ करोगे ना, मतलब जब तुम लोग अगर पीएचडी रिसर्च वगैरह करोगे, जैसे कि और एक डेटा सोर्स मिलता है पीएलएफएस का, मतलब पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो तुम लोगों को तो आई गेस डेटा वगैरह मालूम है, जो इकोनॉमेट्रिक्स में जो यूज़ होता है, स्टेटिस्टिकल पैकेज, स्टेटा आर, पाइथन, तो वहाँ से हम लोग डेटा क्लीन करके निकालते हैं एक्चुअली। तो वहाँ पर भी तुमको वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि लिटरेसी क्या है, कितना एनुअल इनकम है, तो मोर्टिलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, वो सब डेटा कभी कभी एनएफएचएस भी निकालता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है। फिर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में ज़्यादातर तो तुम्हें लेबर मार्केट का, मतलब कितना लेबर वर्कर्स है, कितना वर्कफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते हैं, उनका हाउस होल्ड साइज़ क्या है, तो वो सब तुम्हें मिलेगा। तो दैट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों को इससे सजेशन, मतलब ये क्लास में ज़रूरत नहीं है, जस्ट सजेशन दे रहा हूँ कि जब भी रिसर्च करोगे या फिर ट्राई टू कभी कुछ लिखना है तो ट्राई टू यूज़ ऑथेंटिक सोर्सेज। सो ऑथेंटिक सोर्सेज वही होता है जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर देखना, मैं जो एग्जांपल्स यूज़ करूँ मैं गवर्नमेंट के ऊपर ही दे रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों को और एक एग्जांपल दे देता हूँ सेंसस रिलेटेड, जो कि थोड़ा मतलब स्पेसिफाई हो जाएगा तुम्हारा। सपोज़ मान लो कि एक लोकल गवर्नमेंट है, तुम लोगों का एरिया का कोई भी म्यूनिसिपलिटी का मेंबर भी, म्यूनिसिपलिटी का कम्युनिटी भी हो सकता है। तो एक लोकल गवर्नमेंट है या फिर कोई पंचायत का कोई कमेटी है, पंचायत कमेटी, जो कि तुम लोगों से कलेक्ट कर रहा है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मालूम है क्या होता है? क्या होता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन? Detailed description of population of any area. यस,
वेरी गुड। उस पर हम लोग जैसे कि देखते हैं कि तुम सपोज मान लो तुम्हारा घर, तो तुम्हारे घर में कितने मेंबर है, तुम्हारा मम्मी पापा, तुम्हारे कितने भाई बहन है, तुम, फिर तुम्हारे घर पे तुम्हारा हाउस होल्ड का साइज़ क्या है, किचन है, वॉशरूम है, या फिर एक सिंगल कमरे में रह रहे हो, फिर हेल्थ इश्यूज कुछ है, किसी को तुम्हारे फैमिली में डायबिटीज़ है या नहीं, ब्लड प्रेशर है या नहीं, तो वो सब कलेक्ट करते हैं हम लोग। उसको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी single residence in the locality। सो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है सेंसस मेथड का। तो अभी दूसरा वाला मेथड कौन डिफाइन करेगा? लेट्स सी, दूसरा वाला मेथड क्या है? क्या है? बताओ थोड़ा, मतलब कोशिश करो थोड़ा। सैम्पल से जो डाटा कलेक्ट होते हैं उसको सैम्पलिंग। Sir, Certain section of population is picked up and then analyzed or asked questions about. और कोई इंसाइट्स, मतलब कोई और बोले? when आदित्य। we make sample enumeration of some units of population is called sample. ओके ओके। तो वॉट एवर आंसर्स आई हैव गॉटन फ्रॉम यू, everyone is correct in this respect, I am very happy। so चलो लिखते हैं इसके बारे में। तो क्या है सैम्पलिंग मेथड? तो सैम्पलिंग लिखो मेरे साथ कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस of selecting a portion of a larger population so as to make inference or draw conclusions about the entire population। कोई मेरे को बताएगा सैम्पलिंग का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो घर घर में होता है? कोई बताएगा मुझे? मैम जब चावल बनाते हैं तब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जब चावल बनाते हैं तो मम्मी लोग क्या करते हैं? एक चावल को लेते हैं और दबाते हैं और देखते हैं कि वो चावल मैश हो रहा है या नहीं। अगर मैश हो गया तो चावल पक गया, तो उसका मतलब है पूरा चावल पका हुआ है अच्छे से। अगर मैश नहीं हो रहा है तो चावल कच्ची है अभी भी। सो फिर और एक एग्जांपल जो मेडिकल लाइन में होता है, ब्लड टेस्ट। तुम्हारा सपोज ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए तुम गए हो, या फिर कोई तुम्हें कुछ मतलब कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या लेते हैं? मतलब तुम्हारे बॉडी से सिर्फ थोड़ा ब्लड लेते हैं डॉक्टर, उसको डायग्नाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और निकालते हैं कि क्या कमी है तुम्हारे
शरीर में कि जिसके कारण तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रहे, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे, तो वो भी एक सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है. सो और एक पॉइंट लिखो मेरे साथ. तो इस मेथड में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन जो है about information about some selected units of the population is collected. सो यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन का, जैसे कि तुम सब नहीं बोला, मैं फिर भी इसको थोड़ा एक्सटेंसिवली बोल दे रहा हूँ. जैसे कि मम्मी लोग क्या करते हैं, जो चावल लेके देखते कि चावल पका है या नहीं. तो वो जो एक चावल मैश करके मम्मी बोल रही कि चावल पक गया, तो वो क्या करी, एक छोटा सा एक पार्ट ले रही है प्रेशर कुकर से, और वो ये पार्ट को एग्जामिन करके वो बोल रही है कि पूरा प्रेशर कुकर में जो चावल है वो पूरा पक चुका है. तो यही पॉइंट उसको दर्शाता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट सम सिलेक्टेड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कलेक्टेड एंड देन inference or the conclusion regarding the entire population is drawn. So यही है सैम्पलिंग मेथड. तो इट विल बी बेटर हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिख ले. तो एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो कि सपोज एन इकोनॉमिस्ट considers data on saving plans by households. On a sample of 10,000 households. From the population. So सपोज मान लो कि एक इकोनॉमिस्ट है, वो जानना चाहता है कि एक लोकेलिटी में लोग क्या अपना जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं या नहीं, इफ़ दे आर सेविंग, वेदर दे आर सेविंग देयर मनी और नॉट. सो उन्होंने वो जो लोकेलिटी में जितना लोग रह रहे हैं, दोज मेनी पीपल हु आर रिसाइडिंग, हु आर द रेसिडेंट्स of that particular locality, the economist will go there and try to collect information regarding the saving plans from some particular people without completely enumerating each and every household staying there. So इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल मेथड. और सैम्पलिंग का एक रूल है. रूल जानते हो क्या होता है कि जितना सैम्पल साइज बढ़ेगा, द मोर ऑथेंटिक, उतना ऑथेंटिक रिजल्ट तुम लोग डिराइव कर पाओगे, उतना मोर ऑथेंटिक कंक्लूशन वन कैन ड्रॉ रिगार्डिंग द पॉपुलेशन. सो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लार्जर द सैम्पल साइज, more authentic is the sample and more accurate is the inference. Drawn for the population. Am I clear?
Yes, ma'am. Okay, let me just highlight it. सो अभी मैं सेंसस सैम्पलिंग के बारे में तो बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर दो टर्म्स मतलब आ रहे हैं, दो स्पेसिफिक टर्म्स मैं रेगुलरली मैं बोल रहा हूँ अभी। तो वो दो टर्म्स क्या है? एक है पॉपुलेशन, जिसको हम लोग पॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या है, कोई बोल सकता है? दूसरे नाम से भी बोलते हैं हम लोग। In statistics, इन स्टैटिस्टिक्स। universe. यस। सो क्या है ये? व्हाट इज पॉपुलेशन? मतलब ऑलरेडी सेंसस तुम लोगों को आता है, तो यू कैन डिफाइन पॉपुलेशन। सो कोई ट्राई करेगा बोलने के लिए कि पॉपुलेशन क्या है? आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये तो I, हम्म एक आइटम भी होता है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। हम्म ठीक है। मैम वो लोग जिनका अच्छा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग जस्ट मेरे को बताओ तो। जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज वो सेविंग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? पहले मैं वो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा जो इकोनॉमिस्ट है, वो सेविंग प्लान्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है 1000 हाउस होल्ड से। सपोज़ मान लो कि पॉपुलेशन, सपोज़ मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, मान लो हाइपोथेटिकली। तो वो जो वहाँ 1 लाख हाउस होल्ड रह रहे हैं, रेसिडेंट्स 1 लाख है उस लोकेलिटी में, तो वो 1 लाख को हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे या फिर हम लोग सैंपल बोलेंगे? population. और ये जो 10,000 जो लिखा हुआ है हाउस होल्ड, 10,000 हाउस होल्ड के बारे में जो बोल रहा हूँ, ये क्या है? Sample. और एक चीज़ बताओ तो अभी क्लियर करवा देता हूँ। ये जो मैं जो 10 लाख पॉपुलेशन जो बोल रहा हूँ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? Finite. अच्छा। और आसमान में सपोज मान लो तुम लोग एस्ट्रोनॉमी लेके पढ़ रहे हो, और मैंने बोला कि आसमान में देखो और बताओ कितने स्टार्स हैं, तो वो पॉपुलेशन क्या है? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? Infinite. तो एक साथ देखो, हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक है पॉपुलेशन यूनिवर्स क्या होता है, और पॉपुलेशन यूनिवर्स में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट पॉपुलेशन, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, डोंट वरी, तुम लोग लिखो मेरे साथ। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या बोलते हैं? द एंटायर ग्रुप ऑफ individuals or items or elements that are subjects of a study. It indicates the complete set of entities that the
researcher is interested in examining ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yeah. Okay, okay. So I'm going to the next page. So as I defined कि एक फ्लो चार्ट बना लो, that will be very easy. नोरा तुम लोगों को आता है फिर भी. So यूनिवर्स दो टाइप्स के होते हैं. एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट. तो फाइनाइट का मतलब क्या है? consisting of finite or countable number of elements. एग्जाम्पल एक दे दे. What can be an example? Number of teachers in a school etc. और इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट तुम लोग खुद से लिखो तो थोड़ा, जस्ट डेफिनेशन और बोल के लिखो. कोई एक बोल के लिखो मुझे. consisting of infinite uncountable number of elements. वेरी गुड. एग्जाम्पल क्या होगा? नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. Number of stars in the sky. हाँ लिखो. मैं भी लिख रहा हूँ तुम लोगों के साथ. कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल number of elements. Example, number of skies in the star, sorry, sorry what I am writing, उल्टा लिख दे रहा हूँ. देखो हालत. और एक एग्जांपल दे सकते हैं. नंबर ऑफ फिशेस इन द ओशन. ये भी अनकाउंटेबल है ना, बहुत सारे फिश होते हैं. ये लिख लिया तुम लोगों ने? ओके. सो एक रिसर्च प्रॉब्लम देके हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं. इस चीज़ को एक रिसर्च प्रॉब्लम देता हूँ, तुम लोग बोलोगे मुझे. ये तुम लोगों का टास्क है. मैं देखता हूँ कितना समझ में आया. पहले मैं लिखता हूँ फिर बोलता हूँ तुम लोगों को.
to study the economic condition of agricultural workers in UP. मैं तुम लोगों को पहले दो ऑप्शंस देता हूँ, फिर तुम लोग बोलना मुझे, ठीक है? ऑप्शन ए, all agri workers in UP. Option B, 20% of agricultural workers in तो बताओ तो कोई मुझे पॉपुलेशन कौन सा है, सैंपल कौन सा है? ऑप्शन ए है अभी। फर्स्ट वाला पॉपुलेशन, First one is सेकंड वाला population, second one is sample. वेरी गुड, वेरी गुड। सो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला सैंपल है ना, मैं भूल गया रे। Population. हाँ, देखो तुम लोगों को कितना अच्छे से आता है। और सेकंड वाला सैंपल है। Sample. ओके देन, सो इन द आज इतना तक मैं रखता हूँ। सो इन द नेक्स्ट क्लास तुम लोग थोड़ा रिवाइज करो इस चीज़ को, तुम लोगों को आता है, यू विल गेट द नोट्स, डोंट वरी। सो बट आई वांट के ट्राई टू लर्न इट इन द क्लास इटसेल्फ एंड ट्राई टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन ओनली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, बट सीखना खुद से है। सो और तुम लोगों को आ रहा है, दैट्स वाई बीच बीच में मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ताकि तुम लोग खुद से सीख पाओ। जब खुद से सीखोगे ना, देन यू विल रिमेंबर इट मोर। सो आज इतना तक रखते हैं, लेट मी कंक्लूड नाउ। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स। तो जस्ट मैं लिख के दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। So when we start the numerical session, numerical session will be started after this theoretical part actually, because actually I am a student of DSSB preparation, that's why I am asking you. okay, I know, because these things are also asked in DS that exam. I have seen the question paper. You just browse it, the PYQs, or in the next class I will also come up with some PYQs Okay. of this thing, because they will ask your definition. And in the types of sampling we will also I will also make you explain some examples. So they will give you sort of like examples regarding data collection of or regarding data collection from by framing a sample, and they will ask you which type of sampling method is used, whether probabilistic sampling method is used, whether judgmental sampling method is used. So you need to understand this concept first. So my plan is like, I will teach you this sampling thing. Let me first finish the theoretical part, then I will move on to hypothesis testing, estimation problems like that central limit theorem, and point estimation, interval estimation, that thing. There we will do some mathematical things. Then I will move on to that hypothesis testing, and after completing the hypothesis testing part, then we will start proceeding to
index number, then correlation, then after correlation I will try to direct you towards econometric stuff. I mean, after correlation we will study regression analysis, then econometrics will start. Am I clear? I mean, I think there is. Yes, sir. Yes, Okay, just try to be with me, that's what I want. And Navneet sir is there to help you. If you guys have any sort of question, some of the topics will be from the module will be covered by him also, like he will cover the probability theorem, and some of the वो जो distribution वाला जो है random variables, discrete, continuous, वो कवर करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग कोशिश करेंगे हमारी तरफ से, बट हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग खुद से भी कुछ करो, बिकॉज तुम लोग जैसे आंसर्स दे रहे हो मुझे भी बहुत एनकरेजमेंट मिलता है तुम लोगों को पढ़ाने में, बिकॉज मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से सीखो. सो थैंक यू सर. हाँ हाँ, डोंट वरी, इसका चिंता मत करो, इकोनॉमेट्रिक और भी इंटरेस्टिंग होगा. तुम लोग तब खुद ही बोलोगे सर इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाइए हमें, नशा लग जाएगा पूरा, मैं बोल रहा हूँ. ओके सर. अच्छा ठीक है, चलो देन गाइस, गुड नाइट.